Hi everyone, welcome to day 18 of our 21-day vlog challenge. और आज मैं थोड़ा सा बातचीत वाला वीडियो बनाने वाली हूँ बिकॉज सुबह आई completed a video shoot kind of thing. मतलब ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया हमने. I had a brother who came over and then he shot the videos and he edited it and we posted it on our unfiltered Akanksha page. तो इफ़ यू रिमेंबर आई थिंक इन 16 और 15 अराउंड मैंने कुछ ऐसा बोला था कि एक वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ अनफिल्टर्ड आकांक्षा में जो लड़कियों को विमेन को थोड़ा सा देखना चाहिए बिकॉज दे माइट नीड वन. So that video is out now on that page, unfiltered Instagram wala. I mean unfiltered Akanksha, the Instagram handle. Us pe it is out now, so you can watch that video. And if you like it, just give it a follow and give it a like, give it a good comment, and share it with all the ladies and girls, everyone, anyone you want to share it with. So yeah, I completed. I'll post a छोटा सा clip of that, like a small BTS of it, but not the entire video. And how the setup was, कैसा था, हम कैसा setup पे काम कर रहे थे. I'll post that as well because low budget and good content kind of thing. तो वो हुआ. Then we had some chit chats and all, and then I had my lunch and he went back to his home. So I just finished my lunch right now and I thought I'll just make a video telling you all of these things because obviously उस shoot में मेरा phone use हो रहा था तो I was not able to shoot clips or any vlogs जो भी मैं vlogs पे डालती हूँ छोटे छोटे clips वो मैं shoot नहीं कर पा रही थी. So that's the reason I wanted कि let's talk to you guys about this so that you know. And yeah, so this is what has been until now, like what 3 p.m. आगे की जो भी clips होती है जो भी हम करते हैं आगे I'm going to post it for sure and you'll see it. तो मैं बस ये बोलना चाहती थी कि सुबह से लेके अभी तक थोड़ा सा मैं बिज़ी थी इस काम में but that's why I couldn't put any clips here. That's why this video is out now. That's it. That's all I wanted to say. And yes, so again yeah, one more thing I wanted to say कि अगर आपको 21 days बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा देखना है, like you want me to continue like 22, day 22, day 23, day 24, do let me know in the comment section below because if you want to watch I'm going to post it. But anyways I'm going to do it क्योंकि मैं ऐसा चैलेंज लेके नहीं करने वाली हूँ अगर आपको नहीं देखना है तो. But if I go somewhere and no, I want to record myself because I like camera. Okay, I like camera. तो अगर मैं कुछ शूट करना चाहती हूँ तो मैं वो ज़रूर शूट करके YouTube पे डालूँगी for sure. But if you want to see like a daily vlog of extended version of this 21 day challenge, then please do write in the comment section and yeah, just give all your love to me. I would be very happy to receive all your love and good wishes and blessings. Yeah, that's all. And let's आधा दिन तो इधर ही ख़त्म हो गया, अब मैं लेट्स क्या ही बोलूँ. But yeah, let's see how the rest of the day goes. So just now I finished a shoot here and used all of those planters, this and everything, and it finally got over. तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी मेडिसिन खा के क्योंकि कल मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा. तो I'll just take my medicines and sleep for some time so that the medicines work properly and then शाम को आपसे मिलती हूँ मैं. So now I'm a bit ready to go to dentist. एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, so we're going there.
come with me to go to a dentist appointment. मैं पूरा process नहीं दिखाने वाली, just show a glimpse of it, that's all. Okay, so first of all, I'm really sorry कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ. I have switched on my front camera and then I'm talking to you guys. मेरा tripod कहीं पे रख दिया है मैंने, मुझे नहीं मिल रहा. So I'm talking like this and I'm talking very quietly, थोड़ा सा चुप चुप के, because I went to dentist and I had some problem. I had to fix that, and for that I am in extreme pain. I just can't, even if I suck a bit of breath, so थोड़ा सा पेन होता है मुझे, और गम्स में भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, and all of that thing happened. तो उधर से हम अभी वापस आए, and yeah, so I have been instructed a lot of things, and ये जो केस मेरा हुआ है, it's the doctor said, I'm not saying, these were his words, like ये condition 1 out of 100 होता है, and I have been to like 3-4 doctors by now, and I do not know the cure of this, and neither do the doctors know कि what exactly is causing this issue. Okay, so कुछ लोगों का ऐसा हुआ है, but it used to be like in 7-8-9 months में ऐसा फिर से हो जाता है. So my teeth has some problem. I'm just explaining. I don't want to go in detail right now. Just ऊपर से बोल रही हूँ ऐसा. But मेरा ऐसा 1 महीने करते ही I do I don't know what they call that, but yeah, I do certain treatments and all, and then 1 महीने के अंदर ही मेरा फिर से वही वैसा ही हाल हो जाता है. नॉर्मल का तो मुझे पता नहीं, बट मेरे लिए बहुत पेनफुल है, ये बहुत पेनफुल है, एंड बहुत ज़्यादा, बिकॉज टीथ carries a lot of confidence in you, because you smile. I smile with my teeth wide open, बत्तीसी दिखा के मैं हंसती हूँ. लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से मैं ना खुल के हंस पाती हूँ, ना किसी से खुल के बात कर पाती हूँ. सो आई ट्राई टू हाइड माई सेल्फ अ लॉट. तो वो थोड़ा मेरे लिए अंडर कॉन्फिडेंट मैं फील करती हूँ उसमें. सो या दैट्स, ज़्यादा नहीं बोलती. तो वो हुआ. अभी उधर से हम वापस आए थे क्या, तो उधर से हम वापस आए, एंड नाउ वी वांट टू ईट. I'm not instructed about food habits and all. मतलब खाने का ठीक है, मिनिमल खाना ही खाना चाहिए. It's a part of life. Okay, I won't give so much of can. It's already 4 minutes. Sorry. Okay, so that's it. I mean, अभी मम्मी डिनर बना रही है, so I'll take you guys, because today is something special, and she's making a pitha, which is called चित्तौ पिठा. Now, I don't know the Hindi translation, English translation of these pithas. It's an Odia emotion, right? That's all you call. Yeah, let's see what she is doing. आज चित्तौ पिठा, आज चिता लगी अमावस्या, चित्तौ पिठा टे आज हुए. आमर तो बड़खिया ठाकुर ना, तो बड़खिया ठाकुरंकर आज चित्तौ पिठा भोग लगी भी हुए, आउ मुंडरे सुना चित्ता लगे. तेणु आम ठाकुर तो खाଇବା वाला, तेणु आम टिके खाଇବା वाला, आउ तो पिठा टिके आम करूचु. बहुत लोक कहते कि तमर खाली पूजा पर्व खाली खाଇବା ପାଇଁ कि, अरे आम ठाकुर तो खाଇବା वाला, आमे केमती हेबुनी खाया वाला. सब ओडिया वाला खाया वाला. हाँ, से दिबंगी समझे गोलमटो. हाँ, आज सब ओडिया, प्रत्येक ओडिया घरे आज ये चित्तौ पिठा निश्चय हेथिबो, भोग लागि थिबो. अच्छा, एटा जो कपड़ाटा दोछो, एटा कोन पे दोछो, एटा कोन? से जो पानीटा ना, जो भीतर रे जो वेपरटा
से वेळपुरटाକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଏନି ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ସିଝିକି ରୁହେ ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଏ ପିଠାର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଉ ପିଠାଟା ଡ୍ରାଏ ହୁଏନି ନରମ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଯେତିକି ମୋର ନଲେଜ୍ ଅଛି ମୋତେ ବେଶୀ ଜଣା ନାହିଁ ଚିତଉ ପିଠା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କରେ और ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚିତଉ ପିଠା ଆଉ ସନ୍ତୁଳାର କମ୍ବିନେସନ୍ ଟିକେ ଓଲଟା ପୁଲଟା କମ୍ବିନେସନ୍ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ତୁ but this actually looks very tempting ହଁ ଯେହେତୁ ତୁ ଯିବୁ ନା ପଳେଇବୁ ଏବେ ଆଉ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆଉ ସେଇଠି ଭେଜିଟେବଲ୍ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ନା କହିଲେ ଚଳେ ସେଠି ତ zero ଜିରୋ ତେଣୁ ତୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳାଟା ଟିକେ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଖା ସେତିକି ମୋତେ ଦରକାର ଯେତିକି ଭେଜିଟେବଲ୍ ଏଇ 3-4 ଦିନ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଇପାରିବୁ ଖାଇଦେ ମନ ଭରିକି ଭେଜିଟେବଲ୍ଟା ଖା thank you ଆଉ ସେଇଠିକି ବି ଗଲେ ଟ୍ରାଏ କର ଟିକେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଖାଇବାକୁ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एटा को निहाती प्रत्येक दिन डाइट रे रख all mothers हाँ can do आ मु तो मोर पिला को भी स्कूल ले कहूँ ना बैलेंस डाइट सबुदिन नेबा दरकार माने किछि वेजिटेबल फ्रूट्स निहाती आम डाइट रे डेली डाइट रे हेबा दरकार निहाती दरकार तेणु तू भी सेमती तू भी तो वन ऑफ माय स्टूडेंट ना द फर्स्ट स्टूडेंट तो निहाती खावाटा दरकार so we will taste and then हम आपको लेट यू नो yes आपका खाना अच्छा है आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता so this is how it looks and that's our santula is like a mixture of all vegetables and everything with some masala and all and that's a rasgulla which is called Rasgulla. Yeah, that's it. So I'm back from my dinner. आइए आप ही का इंतज़ार था आपने इतने अच्छे खाने बना के दिए हमें थैंक यू हमारे साथ हमारी माता जी जुड़ चुकी हैं अरे यार ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं Please support her. Love. All I need is your love and blessings and best wishes. Yes, that's all. blessings. Only blessings and best wishes. She needs actually. 21 challenge. It will get over very soon. Okay, but she needs your blessings and best wishes. Yes. सो हमारा यही कहना था कि हम खाना खा के आ चुके हैं हमारा डिनर हो गया है और हमारी माता जी ने बहुत प्यारे खाने बनाए थे जो हम बहुत तकलीफ़ से खाए हैं इन दांतों के साथ बहुत पेनफुल था एनीवेज यू वांट टू से समथिंग No, I don't want to. ओके Wind up. Yes. So if you like this video, do not forget to Like, share, and subscribe. like, share, and subscribe Thank to my channel. And thank you. Kya? Wait. We'll see you another with day what 19. Yes. I feel sad. I don't know why. Thank you for I don't know watching. why I feel sad. कि 21 days खत्म Yes, होने वाला है. even You the feel sad, same no? feeling I'm I don't- getting. See, I actually. don't know about you guys, but I really do feel sad. But जैसा ही मैंने बोला था कि अगर आपको इसके बाद भी vlogs देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना यार हम बना देंगे उसमें क्या है ना तो Bangalore videos you'll be getting. जहाँ जाएंगे हम आप वहीं चलेंगे हमारे साथ उसमें क्या है ना Yes. I will not be there. अरे you will be there don't say like that might not come in my videos that's all Yes. okay she is emotional no you can't be emotional at this point Okay. Guys, thank you for watching actually. थैंक यू सो मच अब हम बिहाइंड द सीन्स रो के दिखाएंगे बाय बाय